लेट अस सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम ये एक नॉर्मल प्लांट का केस लेंगे। नॉर्मल प्लांट में सी दिस इज अ ये एक मेल गैमीटोफाइट है। ये दो मेल गैमीट हैं। ये फीमेल गैमीटोफाइट है। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल वे में देखना है कि ये जब आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है। यहाँ ये एक नया ये बनता है जाइगोट, और यहाँ ये बनता है एंडोस्पर्म। इट इज 3n, it is 2n. It was n, 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 it was n plus n. It was n, it was n, it was n. This is the case during the when we have this normal when we have this diploid. This is also diploid. ये जब डिप्लॉयड है तो ये केस बनेगा। अब देखिए, अब हम इसको जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं इनको कैसे करना है। ये तो नॉर्मल का, इट इज फॉर नॉर्मल। अब हम इसको थोड़ा देखते हैं। जो अगर ये डिप्लॉयड था, इफ दिस इज डिप्लॉयड, दिस इज डिप्लॉयड, द एंडोस्पर्म विल बी ट्रिप्लॉयड। अब हम ये मॉडिफिकेशन करते हैं कि दिस मेल if this male is tetraploid, male is tetraploid, and the female is diploid, normal. नॉर्मल होगा तो ये n होगा, ये n प्लस n होगा। जब ये टेट्राइड, ये वाला दिस इज टेट्राप्लॉइड होगा तो मेल गैमीट विल बी 2n, अगेन 2n। if the male plant is tetraploid and the female is male plant is tetraploid and female is normal diploid, then this 2n will join with this. This 2n will join with this. So resultant embryo will be triploid. And endosperm, this endosperm will be 4n. Got it? If the male plant is tetraploid and the female plant is normal, the zygote will result into
triploid, whereas endosperm will be n plus 2n, that is 4n. Coming to the next say we take this is if a female plant is tetraploid, is crossed with a if the female plant is tetraploid, is crossed with a diploid male plant, what is the expected ploidy of endosperm, vegetative cell and embryo? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको हम देखिए कैसे करेंगे. यहाँ देखिए, ये बेटे फीमेल प्लांट की बात करते हैं. फीमेल प्लांट हमारे पास टेट्राप्लॉइड है. फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है, तो इस टेट्राप्लॉइड में इस टेट्राप्लॉइड का जो गेमेटोफाइट होगा, तो दिस विल बी 2n, egg will be 2n, this will be 2n, this will be 2n plus 2n, this will be 2n. So if this is crossed with a diploid male plant, so that is a normal, that is n and n. So the resultant will be, this was the 2n egg, and this was 2n plus 2n, and this n will join with this, and the zygote or the embryo will be 3n, whereas this n will join with this will be 5n, that is pentaploid. This is pentaploid, then this is triploid. Now the question is expected ploidy of endosperm. Endosperm ploidy we came to know, that is pentaploid. Vegetative cell and embryo. Embryo, this is 3n, this will form embryo. Vegetative cell and generative cell, they are haploid. So this is haploid. Normal है. So this is what this type of questions are asked in competition, and in this way you are supposed to solve them. You try yourself. ये देखिए, what will be the ploidy of antipodal cell, embryo and endosperm if tetraploid is crossed with diploid male? Same, tetraploid, diploid male. ये देखिए, ये आ गया. थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट वे से दिया गया था. यहाँ हमने एंटीपोडल, तो एंटीपोडल की क्या प्लॉइडी होगी? एंटीपोडल ये देखिए 2n, टेट्राप्लॉइड होगा तो 2n. In this way you are supposed to solve all the crossed with the what will be the ploidy level of embryo and endosperm when hexaploid female is crossed with a tetraploid male? ये देखो hexaploid 6n female, this is tetraploid male tetraploid,
ये मेल है, मेल टेट्राप्लॉइड था, तो 4n था, तो इसके 2n मेल गैमेट. This 2n joins with this 2n joins with this 3n, so that is 5n will be the zygote or embryo, whereas this 2n plus 6 plus 8, that is 8n will be the endosperm. In this way you are supposed to solve any question like ploidy.